Hello students, welcome back to the channel. So this is our second video in the unit of physical world and measurements. ଆମର CHSE 11th physics ର first unit ହେଉଛି ଆମର physical world and measurements ଯାହାର କି ଆମେ measurements part ଟାକୁ ଆଗ ଆମେ cover କରୁଛେ ଯାହାର କି ଆଜି ହେଉଛି second part. ଓକେ, first part ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା units ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ. ସରି, first ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ physical quantities ବିଷୟରେ, physical quantities ବିଷୟରେ. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ यूनिट्स विषय सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई सिस्टम विषय जानते देन आम जानते फिजिकल क्वांटिटीज रो टाइप्स जानते जोटा कि हमर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज नेक्स्ट आम जानते सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज विषय राइट सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज सो एतक जिनस आम फास्ट पार्ट रे कवर करले जोटा कि हमर बेसिकली यूनिट्स पार्ट को कवर करछि. ओके, आज आम कौन देखा ना डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशन जो जिनसटा सेटा तुम पे संपूर्ण रूपे नुआ ही अटे कारण आम फास्ट यूनिट्स विषय जानीचे 10th जाए आम यूनिट्स यूज कर आसे एसआई यूनिट्स विषय भी जानते तार केवल आम टाइप्स जानले फंडामेंटल और डिराइव्ड अच्छी बोली और सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज कौन से विषय जानले राइट. किंतु आज आम जो देखा जा डायमेंशंस सेटा बिल्कुल ही नुआ कॉन्सेप्ट अटे जोटा कि तुम 11th रे ही इंट्रोड्यूस होता है. सो डायमेंशंस आरंभ करने पूर्व आउ गोटे यूनिट्स गोटे छोट कथाटे मुझे कहवाक रखी कौन ना से वीडियो रे कही देथिले हेता किंतु मु ए वीडियो रे स्टार्टिंग रु कहि दोची ना वी यूज सम प्रीफिक्स. ओके, केतेडा प्रीफिक्स हम यूज करू फॉर यूनिट्स राइट जोटा कि तुम पिला बेले मेट्रिक सिस्टम बोली पढ़थियो मेट्रिक सिस्टम बोली पढ़थियो पिला बेले सेथरे कौन हुए ना गोटे यूनिट पूर्वरु माने जेकोनोसी गोटे यूनिट पूर्वरु आमे गोटे प्रीफिक्स ऐड करथाउ जोटा कि से यूनिट को छोट बा बड़ करिया साहाय्य करे आ से प्रीफिक्स हमर कोन ना 10 रो पावर. ओके, से प्रीफिक्स हम कौन करे ना पावर ऑफ 10 को सूचाई थाए पावर ऑफ 10 को सूचाई थाए. सो सी प्रीफिक्स गुडा विषय आग टिके जान दवा तापरे हमें डायमेंशन विषय आरंभ करिया. ओके, सो केतेटा प्रीफिक्स आम यूज करथाउ जेकोसी भी यूनिट आगे से गुडा मु आज कहीदेवी तापरे आम डायमेंशन विषय आरंभ करिया. फास्ट होची हमर आसो डेसी. डेसी होची हमर 10 to the power -1. नेक्स्ट आसो सेंटी 10 to the power -2. नेक्स्ट आसो मिली 10 to the power -3. राइट, नेक्स्ट आसो माइक्रो 10 to the power -6. नेक्स्ट आसो हमर नैनो 10 to the power -9. नेक्स्ट हमर आसो पिको. ओके, 10 to the power -12. नेक्स्ट हमर आसो फेमटो फेमटो हमर आसो 10 to the power -15. नेक्स्ट हमर आसो आटो तो हमर होची 10 to the power -18. ओके, लास्ट को हमर आसो जेप्टो 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 हमर होची 10 to the power -21. and the last one योक्टो योक्टो होची हमर y रे डिनोट करा जाय वेट सेटा पर जानिया. योक्टो होची हमर 10 to the power -24. ओके, सो एगुडा होची हमर प्रीफिक्स अटे. ओके, डेसी पई हमें सिंबल गुडा आगे जान दबा. डेसी पई हमें डी यूज करू, सेंटी पई सी,
मिली ପାଇଁ m, माइक्रो ପାଇଁ mu, नानो ପାଇଁ n, पिको ପାଇଁ p, फेम्टो ପାଇଁ f, अट्टो ପାଇଁ a, जेक्टो ପାଇଁ z एंड योक्टो ପାଇଁ y। हमर ये जो प्रीफिक्स गुड़ा यूज करे हमें गुड़ा स्मॉल लेटर्स ओके, स्मॉल लेटर्स को यूज करके तार सिंबल गुड़ा दिया जाए। सो एक्चुअली प्रीफिक्स माने कौन, माने आमे जो लिखुचे मीटर ओके, मीटर लिखुचे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। सो 1 सेंटीमीटर ताले केते 1/100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -2 मीटर, राइट। एटी देखो एटी ताले कौन होची ना सेंटी इज इक्वल टू 10 to the power -2। सेमती ही 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर केते 10 to the power -3 मीटर। एटा केवल मीटर क्षेत्र न जेकोसी यूनिट आम यूज कले ता सहित जदि आम 10 रो पावर किछि गोटे यूज करछे ता पई हमर ई स्वतंत्र प्रीफिक्स गुडा रहिछि। तेणु हमकु सबुठी आम मीटर न लिखि ई स्वतंत्र प्रीफिक्स गुडा को यूज करि परिबा, राइट। जेमती हमर एठी गोटे लोअर ऑर्डर हे गला, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर, सेमती 10 रो पावर बढ़ी बढ़ी गले भी हमर प्रीफिक्स आस्ता है। सेगुडा आगे जान दो, हमरा आसो डेका, डेका आसो केते 10 to the power 1 ओके, हेक्टो 10 to the power 2, नेक्स्ट आसो किलो, एटा हम जानछे 10 to the power 3, नेक्स्ट आसो मेगा 10 to the power 6। एटा यार ऑपोजिट ओके, से हमर निर्दिष्ट पावर गुडा को ही नहीं कि हमें ये प्रीफिक्स गुडा रही। सो जेमती कि तुम मन रखा को इजी होबो ओके। सेमती आसो गीगा 10 to the power 9, नेक्स्ट आसो टेरा, टेरा आसो हमर 10 to the power 12, 10 to the power 15 होचे हमर पेटा 10 to the power 15, नेक्स्ट आसो हमर हेक्सा 10 to the power 18, नेक्स्ट आसो जेटा 10 to the power 21, नेक्स्ट आसो हमर योटा, योटा आसो हमर 10 to the power 24। एटी देखो एटी 10 to the power -24 होतला -24, एटी 10 to the power 24। एटा लोअर हे आछि, एटा हायर ऑर्डर को हे जाइछि। 10 रो पावर को नै कि हमें किछटा प्रीफिक्स सेट करूचे ओके। सो यार सिंबल सब जान दबा, डेका पई डा डी ए स्मॉल डी ए, हेक्टो पई एच, किलो पई के, मेगा पई कैपिटल एम, गीगा पई जी, टेरा पई टी, नेक्स्ट पेटा पई पी एंड एक्सा पई ई, जेटा पई जेड, कैपिटल जेड ओके, कैपिटल जेड एंड योटा पई वाई। सो एठी आमे जेमति मु कहली स्मॉल लेटर यूज करू, एठी आमे जेहेतु एटा बढ़ी बढ़ी चलची तेणु किलो परठू आमे कोन यूज करू कैपिटल लेटर्स, जोटा कि तमे अपर केस भी कहउछ ओके। एठी लोअर केस रो यूज हुए, एठी अपर केस रो यूज हुए। सो यूजुअली हमर डे टू डे जो हमें लाइफ रे साधारणतः नानो जाए ही यूज करि थाउ ओके। पटे नानो एपटे गीगा। नेक्स्ट हमें जेतोले अधिक टिके डेटा विषय जानिया पाए सेतोले हमें टेरा यूज करू एंड एपटे नानो लेवल रे माने स्मॉल मैक्रो लेवल रे पिको यूज करथा ओके। या टू बेसी स्मॉल हमर आमे जेतिकी आम पाठ पढ़ा भितरे एते यूज हे न थाए। एई सब गुडा जो रहिछि एपटे फेम्टो रु योक्टो जाय एंड पेटा रु योटा जाय, ओडा सब साइंटिफिक रिसर्च मानकर
साइंटिफिक रिसर्च अधिक व्यवहार हुए है ଏତକ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠୁ ଆସିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ ସେତକ ଏଇ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାର ୟୁଜ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆସିଥିବ ଓକେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାପରେ ଆମର ଆଉ କିଛିଟା ୟୁନିଟ୍ସ ଜାଣିଦେବା ତାପରେ ଆମର ଆଜିର ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା ଡାଇମେନସନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏ ୟୁ କହିଥାଉ ଓକେ ଏ ୟୁ ବି କହିଥାଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା distance from earth to sun ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀର ଦୂରତା ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ 1 AU ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.496 10 to the power 11 meter ओके 1.496 10 to the power 11 meter ହେଉଛି ଆମର 1 astronomical unit ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आम जाना लाइट इयर कौन समस्त जानी मु भावुँ द डिस्टेंस ट्रावेल्ड बाय लाइट in in vacuum in a year okay the distance traveled by light in vacuum in a year is known as light year one light year कितने 1 light year is equal to एटी कैलकुलेशन करके मु डायरेक्ट लिख देउची 9 into 6 सॉरी 9.467 into 10 to the power 15 meter नेक्स्ट हम जानिबा आर्मस्ट्रांग ओके आउ गोटे यूनिट आम यूज करूँ आंगस्ट्रॉम आंगस्ट्रॉम कौन वन आंगस्ट्रॉम आंगस्ट्रॉम सिंबल हूँ ए तापर गोटे छोट सर्कल टे आंगस्ट्रॉम माने हूँ 10 to the power minus 10 meter okay 10 to the power minus 10 meter or we can say 10 to the power minus 8 centimeter okay एटा हमें वेवलेंथ मेजर करिया को वेवलेंथ गोटे तरंगर लंब केते सेटा मेजर करिया को हमें आंगस्ट्रॉम यूज करता ओके नेक्स्ट हमें जानिबा डिग्री मिनिट एंड सेकंड डिग्री मिनिट एंड सेकंड एटा तुम जानी थो तथा मैं कहि दोची 1 degree is equal to 1 degree is equal to pi divided by 180 radian okay 1 degree is equal to pi by 180 radian so we know pi radian is equal to 180 degree right something 1 degree is equal to 60 minutes so 1 minute is equal to pi divided by 180 into 60 radian right and in the same manner 1 second is equal to pi divided by
3600 into 180 radian. I hope you are understanding it. Okay. एगोटा आमर हो डिग्री मिनिट एंड सेकेंड. सो ये आमर सरची कौन यूनिट पार्ट्स यूनिट पार्टा पूरा कंप्लीट हो. नेक्स्ट आम देखिए कौन डायमेंशन जोटा कि ये वीडियो मेन मेन जिनस अटे मेन टॉपिक अटे. ओके. सो लेट्स सी डायमेंशंस. सो द डायमेंशंस आर the dimensions are the dimension of a physical quantity. Sorry, the dimensions of a physical quantity are the powers of powers or exponents. Okay, same answer. Powers or exponents to which the fundamental quantities are raised to represent the physical quantity completely. Completely. Okay. So this is the definition for dimensions. What does it say? It says that the dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the fundamental quantities are raised to represent the physical quantity completely. माने आमे गोटे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करिया पई फंडामेंटल क्वांटिटी को केते थर यूज करू. राइट. माने गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी केते पावर जे जाय थाए. जेमति आमे 100 लिखिया पई 10 को पावर 10 रो पावर 2 करू. 1000 लिखिया पई 10 रो पावर 3 करू. सेमति जेकोनसी गोटे फिजिकल क्वांटिटी लिखिया पई आमे गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी रो केते पावर बढ़े थाउ सेटा ही हमरो रिप्रेजेंट करे कोन ना डायमेंशंस. ओके. एग्जांपल नेले तमे बेटर बुझी परिबो. लेट्स से this is a cube. Let's draw a cube here. So this is a cube. Hala. यार length L, width is your B, and the height, let's say it's H. Okay. So मुझे दी यार वॉल्यूम मैंने लिखिया कुछ भी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मैं कितने लिखी ना L into B into H. राइट. L टा हमर कोन गोटे लेंथ बी जो लिखुचे मु ए ब्रेड्थ सेटा हमर को फंडामेंटल क्वांटिटी सेटा भी गोटे लेंथ हाइट टा भी गोटे को फंडामेंट लेंथ हाइट रो फंडामेंटल क्वांटिटी कहा को रिप्रेजेंट करछि लेंथ को ही रिप्रेजेंट करछि. सो ए तीनटा जाको गोटे गोटे लेंथ ही अटे. राइट. सो गोटे वॉल्यूम टा गोटे फिजिकल क्वांटिटी ताकू रिप्रेजेंट करिया पे मो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को केथर यूज करछि तीन थर. माने वॉल्यूम टा कोन लेंथ टू द पावर 3. राइट. सेही जिनसटा ही मु डायमेंशंस रे केमति लिखबी ना L रो पावर 3. ओके. कैपिटल L रो पावर 3. L टा एटी कोन रिप्रेजेंट करछि ना फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को रिप्रेजेंट करछि ए कैपिटल L टा. ओके. आउट एग्जांपल लेवा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. डेंसिटी मु धरे एने नेबी. ये जो क्यूब रो डेंसिटी केते हो लेट्स से यार मास वस्तु तो केते ना m. ओके. सो डेंसिटी कोन मास बाय वॉल्यूम. एठी मास टा कोन निजे गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी
तो ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି m ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ମାସ୍ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାସ୍ ଟା କେତେ ଥର ୟୁଜ କରିବି ଥରେ ହିଁ ୟୁଜ କରିବି ନା ରାଇଟ୍ କାରଣ ସେଇଟା ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମ ର ମୁଁ କାଢିଲି କେତେ l ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ରାଇଟ୍ ସୋ ଡେନ୍ସିଟିର डायमेंशन कौन हो m1 l माइनस 3 ओके एठी तमे जानो ना हमर कोन हुए ना हमें जेतो डायमेंशंस लिखो हमें l m l आउ t फॉर्मेट रे लिखो हला m रो किछ पावर रहते l रो किछ पावर रहते t रो किछ पावर रहते एठी जेतो t रो किछ पावर रहुनी त हमें कोन लिखि परिया सिंपली 0 लिखि परिया राइट So this is the representation of a dimensional expression. ହେଲା ଏଠି ଆମେ ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ରାକେଟ ଦଉଛେ ଓକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଠି ବି ତମେ ଡାଇମେନସନ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଠି ସ୍କ୍ୱାର ବ୍ରାକେଟ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଲେଖିବ ସୋ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ ରୁ ରହିଲା ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ କରୁ କାରଣ ସେଇଗୁଡାକୁ ହିଁ ୟୁଜ କରିକି ହିଁ ଆମେ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଲେଖୁ तो तार डायमेंशन गुड़ा हमें आगुआ जानियो फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके सो मास रे हमें जानले कोन m सब स्क्वायर ब्रैकेट मझरे कैपिटल लेटर रे लिखा हो ओके नेक्स्ट हमर केतेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज अछि सातटा राइट सातटा आकर हमको आगो जानिया को पड़ियो लेंथ रो l नेक्स्ट टाइम रो t नेक्स्ट करेंट रो हमें a यूज करिया बहुत बही रे आई मध्ये यूज हेते मु एटी ए लिखुची तमे आई लिखले भी चलियो ओके नेक्स्ट हमरा टेंपरेचर और आई से थर्मोडायनामिक टेंपरेचर हम पे कौन यूज करू थीटा यूज करू और के कैपिटल के मध्ये यूज करथा नेक्स्ट हमरा लुमिनस इंटेंसिटी तापे हमें कौन करूँ ना सीटी लिखू ओके ब्रैकेट रे सीटी लिखी था नेक्स्ट हमारा आसो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे हमें नहीं था मोल ओके स्मॉल लेटर रे मोल ओके MOL लिखियो ओके एटा MOLE होची तार यूनिट सेटा नुह MOL ओके एटा ध्यान रखियो बहुत पिला कौन करती MOLE भी लिखि दियंती तेनु MOL ही लिखियो सो एगुडा हे गेला हमर फंडामेंटल क्वांटिटीज रो डायमेंशंस याकू यूज करके हमें विभिन्न डिराइव्ड क्वांटिटीज पे डायमेंशंस बाहर करियो ओके सो लेट्स सी केतेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज रो हमें एने काढिबा डायमेंशंस ओके सिंपल रो स्टार्ट करिया एरिया एरिया हमन को लेंथ इनटू विड्थ सो एठी लेंथ हमें दी थर यूज करछे सो l टू द पावर 2 राइट नेक्स्ट हमें वॉल्यूम वॉल्यूम रा हमें जस्ट काटले क्यूब पई केते l क्यूब एटा क्यूब पई थिला हला एबे हमें जदी गोटे स्पीयर नवा स्पीयर रो वॉल्यूम रो फार्मूला को 4/3 पाई आर क्यूब सो एठी 4/3 पाई रो कौन से डायमेंशन नहीं डायमेंशन लेस क्वांटिटी एटा जेतु एटा गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू गोटे कांस्टेंट वैल्यू याकू यूज करिया पे हमें कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी एठी यूज करूने राइट सो एटा गोटे डायमेंशन लेस क्वांटिटी अटे सो डायमेंशन कहार आसो केवल r क्यूब रो आसो आ r टा कोन रेडियस गोटे लेंथ सो एठी भी आसो l क्यूब सेम जदी हमें देखिया जे सिलिंडर पई फॉर ए सिलिंडर हमरो पाई r स्क्वायर h राइट सेम एठी पाई टा
डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस आर स्क्वायर पे कौन एल स्क्वायर आ गोटे एच पे एल लिखिया सो एठी भी आसीबो हमरो एल क्यूब ओके सो एठी देखो क्यूब पे डायमेंशन जहा स्फीयर पे वॉल्यूम रो डायमेंशन सेया एंड सिलिंडर पे भी वॉल्यूम रो डायमेंशन सेम ही रहुची सो एठो हमें कोन जानचे ना जेकोनोसी वॉल्यूम हो तार डायमेंशन एल क्यूब ही रहिबो ओके ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଡାଇମେନସନ ଥିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଏଲ କ୍ୟୁବ ହିଁ ରହିବ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ଭଲ୍ୟୁମ ଇଜ ସେମ୍ ଫର different objects objects okay objects or shapes जानले हमें नेक्स्ट हमें देखिए डेंसिटी डेंसिटी हमें सेठी काढी देइचे आगुआ फर्स्ट एग्जांपल लो डेंसिटी रखते m l minus 3 नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी वेलोसिटी कौन डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट टा कौन की गोटे लेंथ ही तापे एल लिखली टाइम टा तळे रहउची सो t इनवर्स ही जो राइट नेक्स्ट एक्सेलरेशन देखिए एक्सेलरेशन माने कौन त्वरण राइट change in displacement change in displacement upon change in time change in time change in displacement सेटा कौन से हमरो वेलोसिटी रो ही रहइबो वेट एटी मो मिस्टेक कली एटा चेंज इन वेलोसिटी राइट एक्सेलरेशन होची चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम सो चेंज इन वेलोसिटी रो डायमेंशन कौन वेलोसिटी सह समान रहइबो l t इनवर्स एंड तळे आ गोटे t रहइबो सो टोटल माने ओवरऑल डायमेंशन केते आसियो l t minus 2 नेक्स्ट आ गोटे फंडामेंट सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी देखिया फोर्स बल बल कौन मास इनटू एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन मास होची m और एक्सेलरेशन हम एटी काढले केते l t minus 2 एठू ही मु पुट कर दोची राइट सो एठी आसीबो केते m l t minus 2 ओके नेक्स्ट हमें देखिया मोमेंटम मोमेंटम कौन संवेग भाबुची तमर मन थिबो संवेग विषय रे ओके मोमेंटम रे हमें देखिया केते हबो ना मास इनटू वेलोसिटी तार फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी मास पई हमें लिखिया m आ वेलोसिटी पई l t minus 1 ओके एटा आसी गला हमर संवेगर डायमेंशन नेक्स्ट हमें देखिए वर्क वर्क हमर कोन फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क कुछ कार्य कार्य रो फार्मूला कोन फोर्स इनटू डिस्टेंस राइट और तमे पढ़थो fs cos थीटा राइट एठी कोन cos थीटा टा गोटे डायमेंशनलेस क्वांटिटी ओके ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस रो कोनोसी डायमेंशन नथाय सो cos थीटा टा ही जो हमरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी और fs दीटा को मिसी के हमरा डायमेंशन आसीयो केते m1 l2 t minus 2 ओके नेक्स्ट हमें जानिबा एनर्जी ओके
एनर्जी और शक्ति हमर एनर्जी केते प्रकार दी प्रकार आम जाने काइनेटिक एनर्जी गतिज शक्ति और स्थितिज शक्ति काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला कौन आसो हाफ एम वी स्क्वायर एंड द डायमेंशन विल बी m1 आउ एठी हमर v रो स्क्वायर होची l t minus 2 रो सॉरी t minus 1 रो वेट l t minus 1 रो स्क्वायर होची सो ओवरऑल आसीबो m1 l2 t minus 2 ओके काइनेटिक एनर्जी गला गतिज शक्ति देन हमर पोटेंशियल एनर्जी जोटा कि हमर स्थितिज शक्ति पोटेंशियल एनर्जी हमर केते आसो mgh फार्मूला m टा हमर मास राइट g होची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी रो हम केते काटले l t minus 2 नेक्स्ट हमर आसीबो h टा कोन लेंथ गोटे l सो ओवरऑली डायमेंशन आसीबो पोटेंशियल एनर्जी रो m1 l2 t minus 2 सेठी आमे जेमति देखिदेले वॉल्यूम टा डिफरेंट शेप्स पे समान अटे एटी देखो ये दीटा कोन जहाले भी एनर्जी एनर्जी रो डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहिला ओके सो हमें एटी जानछे कोन ना गोटे क्वांटिटी पे डायमेंशन सेम ही रहयो नेक्स्ट हमें देखिया पावर पावर हमरा हसियो कोन ना वर्क अपन टाइम वर्क अपन टाइम वर्क रा हमें काटले केते m1 l2 t minus 2 ता सहित ऐड करिया केते t इनवर्स राइट हमरा हे जो m1 l2 t minus 3 ओके सो एगुडा हे गला हमर किछटा क्वांटिटीज रो डायमेंशन आ किछटा देखिया नेक्स्ट हमें देखिया प्रेशर प्रेशर रो हमें जानछे चाप चाप कोन फोर्स अपन एरिया फोर्स अपन एरिया हेले m l t minus 2 अपन एरिया l square सो हमरा जो कहते m l minus 1 t minus 2 ओके नेक्स्ट हमें देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें न्यूटन को ग्रेविटेशनल लॉ जानछे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन को माध्याकर्षणीय नियम राइट ओडिया रे से ही थो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ वी नो gravitational force is equal to g m1 m2 by r square ओके सो g रो हमें जदी काढे जिया g रो केते आसो f r square अपन m1 m2 राइट एटी f टा हमर कोन ना फोर्स फोर्स पे m l1 t minus 2 r square पे l square और तळे जोड़े मास अछि सो m square सो ओवरऑल हमरा आसीयो कोन ना m minus 1 l3 and t minus 2 ओके नेक्स्ट हमें जानिया थोड़ा एंगल पे आई होप तुम एठी गेस कर परतो एंगल पे कोन आसीबो एंगल थीटा हमें कोन अछि आर्क लेंथ अपन रेडियस
राइट। एटी देख आर्क लेंथ टा कौन आमर गोटे लेंथ ही, राइट। तो राडियस टा भी आमर गोटे लेंथ। सो एंगल थीटा इज ए डायमेंशनल dimensionless quantity. So it's a dimensionless quantity. Okay. So ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ dimensions ପଢିବା କାହିଁକି? ଆମେ 10th ଯାଏଁ ତ ପଢି ନଥିଲେ, right? ଏବେ ତାହେଲେ ଆସିକି କ'ଣ ଦରକାର ହବ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପଢିବା dimension? ଆମେ ସେଇଟାକୁ କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। ଓକେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ନା converting a physical quantity from one system to another. Okay. ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାଇମେନସନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ। ଆମେ ଡିଟେଲରେ ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଗ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଟୁ ଚେକ୍ କରେକ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଲସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ତାର କରେକ୍ଟନେସ୍ ମାନେ ସେ ଲଟା କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଡାଇମେନସନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। Next ଆମେ ଜାଣିବା to relation between dimensions. Sorry, derive relation between quantities. Relation between quantities. जोड़े क्वांटिटी भितर कौन संपर्क रही सेगुड़ा जानापी भी आम डायमेंशन को यूज कर। ओके। सो फास्ट एप्लिकेशन आम देखिए कौन ना कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स माने गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को आउ गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट को डायमेंशन यूज करके आम केमती कन्वर्ट करथो सेटा आम फास्ट देखिया। सो एठी गोटे एग्जांपल लीजिए आम जी रो। ओके। जी स्मॉल जी कौन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। हम जानचे कितने 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड, राइट। आम 9.8 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिया कोथर ना किलोमीटर पर आवर रे, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करिया एटा बा एक्सेलरेशन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रहयो एटी आवर स्क्वायर। ओके। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करिया कोथरे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर रे यूज करके डायमेंशंस। सो लेट्स सी केमती करे हमें एटी लिखि परिया जो फॉर्म में लिखाई छी n1, राइट। मु तार न्यूमेरिकल वैल्यू पे n1 लिखुजे मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेटा को हमें डायमेंशनली लिखले कौन लिखा l1 t minus 2। ओके। सो एठी डैश बदल में लिखी n2 कारण एठी भी गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू ही आसीबो ना ता बदल में n2 लिखि देबी और किलोमीटर आवर स्क्वायर कोन हमरा सी लिखि देबी एठी धर l1 t1 नै जी एठी l2 t2 नै जी। ओके। l2 t2 रा t2 रा इनवर्स स्क्वायर, राइट। सो एठी हमरा आसीबो कोन n2 हमरा काढियार अछि। सो n2 को एपटे रखी आ सब आमे सेपट को नहीं जिया ताले आसीबो कोन n1 into l1 by l2 t1 by t2 रा होल टू द पावर -2 आसीबो हमरा -2। ओके। n1 हमरा अछि हमको एठी जणा अछि 9.8, राइट। l1 नंबर कोन 1 मीटर l1 टा रिप्रेजेंट करछि का मीटर को एठी 1 मीटर l2 का को रिप्रेजेंट करछि किलोमीटर को लिखि देबी 1 किलोमीटर
T1 हमको रिप्रेजेंट करछि सेकंड को 1 सेकंड और T2 रिप्रेजेंट करछि आवर को 1 आवर इज इक्वल टू 3600 seconds, राइट। डायरेक्ट एटी मु कन्वर्ट करके लिखि देछि। एटी मु जदी किलोमीटर टा करबी 10 टू द पावर 3 मीटर हे जो, राइट। सो calculating all this we will get एटी हमें केते पाया मीटर मीटर तो कैंसिल हे जो सेकंड सेकंड कैंसिल हे जो 1 by 10 to the power 3 to 1 by 3600, ओके। हमरा आसीबो केते कैलकुलेट करले हमरा आसीबो एठी हमरा एठी गोटे स्क्वायर भी अछि, राइट। एठी जदि मु 3600 टा को ऊपर को नै जिवि एठी -2 टा 2 हे जो 9.8 divided by 1000 into 36 ର ସ୍କ୍ୱାର ଟାକୁ इनवर्स स्क्वायर ଟାକୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ୱାର କରିଦେବି 3600 ର ସ୍କ୍ୱାର, ओके। So on calculation we will get 127,008 kilometer per hour square. So एठी हमें डायमेंशंस को यूज करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो वैल्यू 9.8 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर रू कन्वर्ट कर देले कोथरे ना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर रे कन्वर्ट कर देले, ओके। सो एठी तमे देखिबा जदी हमें सेमति रे भी करि पारि थांते, राइट। माने मीटर को आगो किलोमीटर रे करथांते, नेक्स्ट सेकंड को हम सेकंड स्क्वायर को हमें आवर स्क्वायर रे कन्वर्ट करि पारि थांते। किंतु एठी हमें यूज करले कोन ना डायमेंशंस यूज करिवे एठी एई वैल्यूटा 12700 सॉरी केते अछि एटा 1,27,008 किलोमीटर पर आवर सेकंड सॉरी आवर स्क्वायर को कन्वर्ट करले हमें डायमेंशंस को यूज करिके। सो एग्जाम रे आसिले तमे इमितिया ही करिवो डायमेंशंस नै कि जेते सहज भी पड़थिले भी तमे डायरेक्ट आउ करि देबोनी, डायरेक्ट करले भूल हबो कोनोसी मार्क मिलिबो नाही। सो तमे एमति ही डायमेंशंस काढी करिवो, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें देखिए करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन चेक करिया पे हमें डायमेंशन यूज करी केमति करिया सेटा हमें देखिया। सो हमें गतिर तीनटा नियम जो पढ़थिले नवम रे सेथरो गोटे मु एठी लिखिबी s ut प्लस केते t प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। जोटी s होची डिस्टेंस, u होची इनिशियल वेलोसिटी, t होची टाइम एंड a होची एक्सेलरेशन। सो हमें करेक्टनेस केमति देखु जदी डायमेंशन ऑफ LHS is equal to डायमेंशन ऑफ RHS ही जाए, डायमेंशन ऑफ RHS ही जाए ताहले हमें जानिबा जे इक्वेशन टा करेक्ट अटे, ओके। जदी न हुए ताहले हमें जानिया जे इक्वेशन टा भूल अछि। सो एठी देखिया s s टा हमर कोन LHS रे अछि s जो सेटा कोन ओटे डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ LHS ताले केते डिस्प्लेसमेंट रो डायमेंशन केते हो l, राइट। डायमेंशन ऑफ RHS देखिया हमें RHS रे जोड़े टर्म अछि, ओके। UT रो आगे देखिया UT रो डायमेंशन केते आसियो l u पई l t minus 1 और t पई t, सो यार आसियो l, राइट। सेमते हमें जदी देखिया हाफ एटी स्क्वायर रो हाफ एटी स्क्वायर डायमेंशन केते आसियो a पई आसियो हमरा l t minus 2 t स्क्वायर पई आसियो हमरा t स्क्वायर, सो एठी भी आछि l, ओके। सो डायमेंशन ऑफ LHS आसला हमरा l एंड डायमेंशन ऑफ RHS भी हमरा l ही रहउची। सो ए इक्वेशन टा s ut plus half at स्क्वायर एठी ठीक अछि, ओके। ताले हमें ओटे देखिया आ गोटे इक्वेशन नहीं कि देखिया ठीक होची कि नहीं, ओके। e equal to mc square
आइंस्टाइन को इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं की टेस्ट करें डायमेंशन ऑफ E डायमेंशन ऑफ E एनर्जी हमें केते काटले m l2 t minus 2 right and dimension of mc square हमरा आसो केते m आउ c टा हमर कोन गोटे वेलोसिटी राइट वेलोसिटी को l t minus 1 रा स्क्वायर हमरा आसो m l2 t minus 2 okay hence equation is correct जेहेतु एटी LHS रो डायमेंशन और RHS रो डायमेंशन समान हो जाउची इक्वेशन टा हमरा करेक्ट अछि ओके सो एटा गला हमरा सेकंड एप्लीकेशन ओके सो थर्ड एप्लीकेशन जानिया पूर्व हमें गोटे एटी नोट देखिया नोट कोन ना q इज इक्वल टू a plus b धरो let an expression be q is equal to a plus b where q a and b are any quantities any quantities let q is equal to a plus b an expression where q a and b are any physical quantities then then it's necessary that q is equal to a plus b okay एटा हमें जानले एमती हेले ही इक्वेशन टा करेक्ट हो एठी हमें जानिया कोन ना a रो डायमेंशन b रो डायमेंशन सह समान हेबा दरकार हैला a रो डायमेंशन b रो डायमेंशन समान हेले ही एडिशन ही परियो एडिशन हेबो नहले हेई परियो नहीं जोडे क्वांटिटी को हमें जदी ऐड करछे तेनु सेमानकर डायमेंशन दिटा समान हेबा कथा एठी जदी तुमको बुझी होनी धर मु कहबी 5 रुपीज सह 5 केजी मिसाओ 5 रुपीज सह 5 केजी मिसेले केते केजी मिलियो यार किछि आंसर अछि कि 5 रुपीज सह 5 केजी मिसी पारियो कि नहीं मु जदी कहि 5 रुपीज सह 5 रुपीज मिसाओ सेठी तमे कहि पारियो जे 10 रुपीज हबो नहले मु जदी कहि 5 केजी सहित 5 केजी मिसाओ सेठी तमे 10 केजीस कहि पारियो राइट किंतु मु जदी इनते मन इच्छा कहि 5 रुपीज सह 5 केजी मिसाओ ताल तमे कहि पारियो कि किछि आंसर हेबो सो सेम जिंस एठी होची a रो डायमेंशन जहा b रो डायमेंशन सेया हेले ही दीटा को मिसी पारिबे और गोटे फिजिकल क्वांटिटी को देई पारिबे ओके एटा थला हमरो नोट गोटे ओके सो एप्लीकेशन 3 हमें देखिया एप्लीकेशन 3 हमर कोन थला ना derive relation between physical quantities derive relation between quantities थला हमर एप्लीकेशन 3 right एटी हमें गोटे क्वेश्चन सॉल्व करी तारा देखिया ओके so let's read the question a planet moves around the sun in a nearly circular path its period of revolution कौन ना sun चारिपटे एटा माने कर sun चारिपटे थरे घुरी आसिया को गोटे planet को जति समय लगिथे सेटा होची हमर गोटे period of revolution okay period of revolution केते t depends upon radius of orbit r, mass m of the sun, and gravitational constant z. Okay. t टा डिपेंड करछि हमरो एई तीनटा क्वांटिटी ऊपर तो हमको कोन देखार अछि ना शो डायमेंशनली दैट t square is proportional to r cube okay so let's see how केमति सॉल्व करिया एई रिलेशन टा ही काढिया को हमरो अछि एटा हमरो अछि एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस ओके सो सॉल्यूशन या को केमति करंती
Now let's assume कौन assume करिए ना t is equal to k r to the power a m to the power b g to the power c. सो एटी तुम पचार के कौन आर आर एम जी कौन तार पावर ए बी सी आप केमती लिखिदेले राइट. सो आर एम जी ये देइछि ना राइट. टी डिपेंड्स अपॉन आर एम एंड जी. सो मैं लिखिपारि टी डिपेंड्स अपॉन आर एम जी. मत किंतु ये देनी जे रेडियस ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि ता स्क्वायर सह कि तार क्यूब सह कि अन्य कौन पावर सह देनी. सो मुझे तीनटा आर्बिट्रारी कांस्टेंट माने मन इच्छा तीनटा लिखिदेवी. मन करी लिखिदेवी आज्यूम करी लिखिदेवी जे आर रो पावर ए सहित से प्रोपोर्शनल एम रो पावर बी सहित से प्रोपोर्शनल जी रो पावर सी सहित से प्रोपोर्शनल. अब प्रोपोर्शनालिटी उठेले मु कोन गोटे कांस्टेंट ऐड करबी. से कांस्टेंट होची हमर के. सो एमती मु अज्यूम कली कोन माने t इज इक्वल टू k r टू द पावर a m टू द पावर b एंड g टू द पावर c. एटा हमर इक्वेशन 1. एटी मन रखिया को अछि जे k टा गोटे डायमेंशन लेस क्वांटिटी. डायमेंशन लेस क्वांटिटी k ର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ. ओके. डायमेंशन कार कार ताले अछि t ର अछि t ର ତ अछि r ର अछि m ର अछि g ର अछि. ओके. सो t ର डायमेंशन केते t टा मु कोन बोली सन चारिपटे घुरिया को प्लैनेट को केते समय लागुची. सो टाइम t ର डायमेंशन से t k ର କୌଣସି डायमेंशन ନାହିଁ. r ର डायमेंशन कोन l. सो r टू द पावर a ର डायमेंशन केते ही जो l टू द पावर a राइट. मास टू द पावर b तार डायमेंशन कौन हो मास टू द पावर b m टू द पावर b लिख परियो. g g रो डायमेंशन हमें काढिथिले केते m minus 1 l 3 t minus 2. सो g टू द पावर c पई मु लिख परिबी m minus c l 3c t minus 2c. बुझियला कौन से असुविधा नहीं. सो एई तक को दे देबी इक्वेशन 2. ओके. इक्वेशन 2 दे देबी. नाउ पुटिंग equation 2 in equation 1. इक्वेशन 2 रो जो वैल्यू गुडा रहला ताको मु नै पुट करबी इक्वेशन 1 रे. तो कोन पाइबी m0 l0 t1 टाइम पे मु इते लिखिबी m0 l0 t1 is equal to केते l to the power a. k रो तो कोनोसी डायमेंशन नहीं तो डायरेक्ट r रो स्टार्ट करबी l to the power a m to the power b and g पे लिखिबी m to the power minus c l to the power 3c t to the power minus 2c. तीनटा को कंबाइन कर लिखिबी मिलिबा मते केते m b minus c एटी b अछि एटी minus c गुणिले m b minus c नेक्स्ट l a plus 3c and t minus 2c is जो हमरा कौन डायमेंशन ऑफ द आरएचएस साइड. सो हमें सेठी जानले कौन करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन रे जे एपटर डायमेंशन और एपटर डायमेंशन सेम हेले ही एक्सप्रेशन टा समान हबो. तो एई दीटा कर डायमेंशन मैच कर देले हम यार वैल्यू पाई परिया. तो एठी मैच करले हमें b minus c is equal to 0 राइट. एठी m रो वैल्यू के m रो डायमेंशन के 0 अछि. एठी को m रो b minus c. सो मु दीटा को इक्वेट कर परियो b minus c is equal to 0 जोठी हमें पाई जाउछे b is equal to c राइट. नेक्स्ट a plus 3c is equal to 0 जोठी हमें पाई जाउछे a is equal to minus 3c एंड लास्ट रे हमें पाउछे minus 2c is equal to केते 1. सो c is equal to minus 1 by 2 राइट. एटी a is equal to minus 3c राइट. एठी हमें पाई गेले c is equal to minus half. सो b is equal to c.
ताले b ର value भी केते -1/2 right. A ର value -3c, so a is your -3 into -1/2, that is equal to 3/2 right. So expression टा मुझे लिखिया होची भी t is equal to हिजो केते k, एटी k लिखी r to the power 3/2, r ର power केते a थिला 3/2, नेक्स्ट लिखी l थिला हमर केते m सॉरी m थिला m ର power -1/2 और g ର power -1/2 ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ତିନିଟା ଯାକର ପାୱାର ର ତଳେ 2 ଅଛି, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स दी पट को स्क्वायर कर देले ये पावर जो तले 2 अछि से गुडा उठी जो t स्क्वायर इज इक्वल टू k r cube m minus 1 and g minus 1, that is equal to t square is directly proportional to r cube, hence proved। या ही हमरा प्रूव करियो देखला जे देखाओ t square is directly proportional to r to the power 3। okay, so this was the question। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ରିଲେସନ୍ କେମିତି କାଢୁଛେ, ଏଠି ଆମେ ଟି ଆଉ ଆର୍ ଭିତରେ କାଢିଲେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଭିତରେ ବି ଆସିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ୟୁନିଟ୍ସର ଯାହା ବାକି ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ସର ପ୍ରିଫିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ରାଇଟ୍, ପ୍ରିଫିକ୍ସ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ dimension and its application right। so this was the video। okay, आज video एटी रखिए। नेक्स्ट वीडियो रे हमें कौन देखिए सिग्निफिकेंट एरर सॉरी numbers significant numbers and last को हमर रहियो error analysis। so this was the video। if there are any doubts let's ask me in the comment box, and till the next video, goodbye।